So I recently drove the Kia Seltos HTX iVT. Now you may ask what iVT is. It is the Intelligent Variable Transmission, which is just a fancy name for CVT, which is known for its rubber band effect. Now I drove the HTX iVT for a particular reason, because it seemed like the car which would sell the most, because not everyone will go for the turbo variant and people are leaning more towards the automatic. So this is the petrol automatic non-turbo variant. Now we are going to do a quick review of the car, पर हमारा फोकस रहेगा ड्राइविंग डायनामिक्स पर. But since it's a Kia, so we should start with the features first now. Now I'm not going to list down features, one by one. Let's just get down to the features that matter the most to people, like panoramic sunroof. It gets ADAS now, a heads-up display. पर यार जो कार हमने चलाई थी उसमें तो कहीं नहीं दिख रहा था ये सब. मुझे इस वेरिएंट में नहीं है, पर टॉप मॉडल में सब कुछ आता है. यार मेरी बलिनो में ही है HUD और ये सेल्टॉस में नहीं है. मतलब ये मॉडल भी तो 16-17 लाख का तो आता ही होगा ना. बलिनो में अगर तेरा एक्सीडेंट हुआ ना, हेड्स अप डिस्प्ले विल बी अप ऑन योर हेड. तो इसका मतलब सेल्टॉस बहुत ही सेफ कार है. फीचर्स इस कार में बहुत सारे हैं, लाइक इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, वॉइस कमांड्स, ऑटो हेडलैम्प्स, 3 different ड्राइव मोड्स, UV cut solar glass for the front windshield and all the windows. But my favorite is ventilated seats, which is definitely a boon in Delhi summers. गर्मी में ऑफिस पहुंचने से पहले ही ना हमारी बैक सीट से चिपक जाती है. तो भाई नहा कर जाया करो ना. नहा कर तो मैं वैसे भी नहीं जाता, लेकिन वेंटिलेटेड सीट्स अगर एक जेनेरिक फीचर बन जाए ना तो मजा ही आ जाएगा. एंड बाकी बीइंग अ किया, यू विल नेवर फेस एन एर्गोनॉमिक इशू इन द कार. एर्गोनॉमिक बोले तो है, एर्गोनॉमिक का सिंपल मीनिंग है मिनिमाइजिंग द स्ट्रेन ऑन द पीपल इन द कार. अच्छा, और हिंदी में क्या मतलब है भाई इसका? हिंदी में बताओ. मतलब कि जो चीज आप जहां एक्सपेक्ट करोगे ना वो आपको वहां मिलेगी. जैसे कि आपका हाथ अपने आप फोन रखने के लिए यूं सेंट्रल कंसोल की तरफ चला जाता है, तो वहां पर आप फोन रखना चाहते हो एंड यू विल फाइंड एन एप्रोप्रिएट प्लेस देयर, जो कि आई नो आजकल हर कार में होता है, बट इन अ किया और अ hyundai you will definitely find an appropriate place there. और नॉट जस्ट दैट, लाइक बॉटल रखने के लिए डोर में प्रॉपर स्पेस, और बाकी भी हर जगह लाइक नेचुरली आप जहां बटन्स एक्सपेक्ट करोगे, जहां आप कभी होज एक्सपेक्ट करोगे, वहां पर आपको वो मिलेंगे. और ये है hyundai और किया का सबसे बड़ा USP. hyundai और किया USB बेचने लगे, मेरे को पता ही था. ये एक्स्टर और ये सोनेट जैसी गाड़ियां बेचेंगे ना, तो एक ना एक दिन ये दिन आना ही था. अरे भाई USB नहीं, USP, which means unique selling proposition. और ये एक्स्टर और सोनेट ना अच्छी कार्स है भाई, ऐसा मत बोल प्लीज. सच में, मतलब सच में, सच में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द परफॉर्मेंस. अब 1.5 टर्बो पेट्रोल मैंने अभी तक किया सेल्टोस नहीं चलाया है, लेकिन मैंने पुरानी क्रेटा, पुरानी सेल्टोस और इवन नई वर्ना का 1.5 टर्बो चलाया है. एंड आई हैव टू ऑनेस्टली से दैट दे आर नॉट पर्टिकुलरली एक्सप्लोसिव. दे आर फास्ट, दे आर अमेजिंगली रिफाइंड, बट दे आर नॉट एक्सप्लोसिव. अब मैं इस पर डीप डाइव नहीं करना चाहता. Let's move on to the naturally aspirated engine, which is the 1.5 liter 4-cylinder 113 bhp with 144 Nm of torque. Now is it enough? मैं इस engine को अगर एक वर्ड में समराइज करूं तो सेल्टोस फैंस को थोड़ा सा हर्ट हो सकता है, पर मुझे करना भी पड़ेगा because I want to be completely honest with you. And that word is lethargic. I mean 113 bhp is enough power. And 1.5 liters is enough capacity for an engine for the car the size of Seltos. I mean, Seltos is not a very big car. It is big car. It's not a very big car that this much power would not be enough for it.
but somehow it just isn't. Maybe the engine lacks some refinement, but I'm not sure that is the case, because Kia and Hyundai, they are at the top when it comes to engine refinement. So that's not the case, but the engine is just not up to the mark. Maybe the tuning is such because they want the turbo variants to sell more, because when you will test drive the turbo variant, you will feel that kick, that pushback, which you will not get at all in the naturally aspirated one. I was expecting just a little bit of it, a little bit of good power, which was lacking. यार ये lethargic का मतलब ना हिंदी में बताओ प्लीज, हिंदी में बताओ ना प्लीज यार। इसका मतलब है कि पावर डिलीवरी लिनियर है, जर्कीनेस भी नहीं है, बट द outright acceleration is not that great. I mean, it felt like that the engine is getting a little strained when reaching triple digits, of course. I mean, contrast में हमारे पास 1.5 लीटर naturally aspirated engine है Honda का, जो आप सेकेंड गियर में 100 kmph तक ले जा सकते हो, और वो इंजन फिर भी कहेगा कि और पावर निकालो यार। I was expecting a little bit like that, but somehow I was somewhat expecting a similar level of engineering here. बट क्योंकि जो वो लेने वाले मॉडल्स हैं ना, वो ऑन रोड 16-17 लाख तक तो वैसे भी पहुंच जाते हैं, तो इस लेवल के इंजीनियरिंग में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 16-17 lakhs is not a small amount of money, and I'm sure that the naturally aspirated 1.5 liter engine will sell more than the turbo engine, because that's just around 21-22 lakhs, so it's a very expensive car. Anything over 20 lakhs is a very expensive car. Now some people might say that 20 lakhs is normal these days, right? But still, like, the turbo variant starts at 18.3x showroom, which easily crosses 20 on road. Gear shifts भी काफी smooth है, considering the CVT transmission, पर थोड़ा सा भी pushback effect नहीं है. During the test drive, I had my foot floored on the accelerator, but I felt almost no acceleration. Now I know to feel the acceleration there is a turbo variant, but hey, what will a driving enthusiast do when he sees any car? He has to try to get the most power out of that engine. So all in all, ये car specifically the non-turbo variant उसके लिए suitable नहीं है जिसे ड्राइविंग पसंद है। प्लेजर ऑफ ड्राइविंग आप कहीं और से लो। But someone who cares only about the number of features, the size of the screen, sunroof, wireless charging, and needs to go from point A to point B in comfort, and that's it, then this car is a good choice for them.